हाँ बेटा, now it is connected. All of you get connected very fast. हाँ, अब देखो, the compiler compiles all the code at once and it returns the bulk of errors. That's why the programmers or the users are having problem to identify the errors because they are coming in bulk. Okay, but this interpreter, what interpreter does? Interpreter क्या करता है आपका? Interpreter is also called line by line compiler. It compiles. जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, when you will do the programming and if your language is using compiler, ठीक है, जैसे लिखा हुआ ना कि यहाँ पे कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो पाइथन के अंदर में जैसे ही आपने कोई लाइन में गलत किया उसी समय क्या होगा, वो दैट पर्टिकुलर लाइन विल बी कलर्ड विथ रेड और ग्रीन कलर, ठीक है, व्हाटएवर टाइप ऑफ एरर इट विल बी कलर्ड विथ दैट पर्टिकुलर कलर, वो शो करने लगेगा एरर, ठीक है, and you will get the message as you are going to press enter key and the previous line is having an error, this interpreter is going to produce an error. That's why it is called line by line compiler. ये जैसे जैसे आप कोडिंग करते जाएंगे वैसे वैसे ये कंपाइल करता जाता है और आपको ओके करता जाता है कि ये लाइन आपकी सही है, बट कंपाइलर शुरू में बताता नहीं है कि एरर है, लास्ट में after completion of the program, when you are doing the process of compilation, then it is producing the bulk of errors, ठीक है। अब क्या होता है, that's why this is called line by line compiler and this is called page compiler, पूरा का पूरा एक प्रोग्राम ये पूरा का पूरा कंपाइल करता है। अब देखो यहाँ पे the code which we are writing in high level language, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उनको बोलते हैं हम सोर्स कोड। The program which we are writing in high level language, Python में जो आपने प्रोग्राम बनाया and the file which you have created in Python, that is known as source code, and after compilation again the same named file is getting created in the same folder। जब आप कंपाइल करते हो प्रोग्राम को, कंपाइलेशन के बाद में आपके पास 2 या 3 फाइल्स जो है और एक्स्ट्रा बनती है विद द सेम नेम बट डिफरेंट एक्सटेंशन। इस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो होता है .py, पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है .py, and after compilation we are getting 2 or 3 more files, ठीक है। तो जो आपकी जो मेन फाइल होती है जो कि आपको रन करवानी होती है आफ्टर कंपाइलेशन, if no error is there, then a file is getting created and that is known as object code, object code। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ध्यान रखना बेटा। The program which is written by the programmer in high level language or in any of the computer programming language is known as source code, and after compilation the code is again regenerated in another file, और वो जो कोड होता है वो बिट्स के फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में, understood, and the file which is containing those contents is called object code, ठीक है। कंपाइलेशन के बाद जो फाइल बनती है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, और उस फाइल का से फॉर एग्जांपल दिस फाइल नेम इज रवि, रवि नाम का मैंने एक फाइल बनाया तो इसका एक्सटेंशन होगा py। आफ्टर कंपाइलेशन वी विल गेट 2 फाइल्स, ravi.obj, फिर मिलेगा आपको ravi.bak,
होता है उसी का एक बैकअप फाइल बनता है आफ्टर कंपाइलेशन, ठीक है, एंड एक ऑब्जेक्ट फाइल होती है दैट इज विदाउट एनी एरर. If the error is there, this object code is not getting generated. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. दैट मींस दिस इज लिटिल बिट स्लो. इंटरप्रेटर इज लिटिल बिट स्लो क्योंकि ये लाइन कंपाइलर होता है, हर एक लाइन में यूजर को इंटरप्ट करता है. दैट्स व्हाई इट टेक्स मोर टाइम, बट दिस इज यूजर फ्रेंडली. एक लाइन के बाद अगर आपको पता लग गया कि यहीं पे एरर है तो आप उसको वहीं पे रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है. And sometime if you have done the mistake in the previous line, due to that mistake the next line is also having problem. तो कभी-कभी क्या होता है, unnecessarily errors भी आ जाते हैं due to the error in the previous line. Understood? So that is not happening with Python. That's why it is written, it is interpreted language. Now its completeness, जो fourth point है, that is its completeness. So many times I told you within the class, Python is a complete language. You can do all the work in Python. ठीक है. Whenever we are doing programming, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाता है, because we are learning about object oriented programming. But whenever कोई भी प्रोग्रामिंग आप यूज कर रहे हो, वी आर गोइंग टू डेवलप सॉफ्टवेयर्स. अब सॉफ्टवेयर के टाइप सॉफ्टवेयर्स आर देयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं जो कि वेबसाइट्स होती हैं, या फिर आपका इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन व्हिच रन्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी. ठीक है, तो वो जो ये सारे डिफरेंट काइंड के एप्लीकेशंस, डिफरेंट काइंड के लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट होती है उनको क्रिएट करने के लिए. बट पाइथन इटसेल्फ प्रोवाइड्स डिफरेंट पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स. Using those modules and packages, we can have any type of programs or softwares can be developed using Python. ठीक है, that's why it is written, it is complete in itself. मतलब इसको और किसी भी थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरे लैंग्वेजेस की जरूरत नहीं पड़ती to import them and do the programming. ठीक है, इसमें हम CUI डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, as well as we can develop GUI applications. Some of the languages are having limitation that whenever we are going to do GUI application development using that particular language, that is creating problems, and they are unable to provide the environment to develop GUI applications. But Python में ऐसा नहीं होता, वो भी हो जाता है. If anyone is having any question regarding these topics या जो भी मैं बता रहा हूँ, you can ask the question from chat box because we are not offline today. ठीक है, anyone who is live having any of the problem beta, you can ask me. ठीक है, next one is क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. और बहुत सारे लैंग्वेजेस जो हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज नहीं है. क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है इट कैन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. प्लेटफॉर्म जो होता है उसका पूरा का पूरा जो रिलेशन होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से. विंडोज, Linux, Unix, and all different types of operating system. The most popular operating system, two operating systems theme I have written. अब एग्जांपल क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक साथ काम कर सकता है वो. Say for example, we are working on distributed
कंप्यूटर सिस्टम यानी कि नेटवर्किंग में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। यू आर हैविंग अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल एंड दे आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है प्रोजेक्ट, छोटे छोटे पार्ट्स में करके 5 लोगों को हमने डिवाइड कर दिया प्रोजेक्ट को। दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट सिस्टम एंड दे आर हैविंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दोज सिस्टम, और उन्होंने पाइथन में अपने अपने मॉड्यूल का कोड डेवलप किया, ओके। अब क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट खत्म हो जाता है आपका, तो क्या करना है, अल्टीमेटली वी आर वर्किंग, यू ऑल 5 आर वर्किंग ऑन अ सिंगल सॉफ्टवेयर। तो आपको क्या करना है, सारे मॉड्यूल्स को अटैच करना होता है। तो एक बना है विंडोज एनवायरनमेंट में, एक बना लाइनक्स एनवायरनमेंट में, दूसरा किसी ने दूसरे एनवायरनमेंट में डेवलप किया है। तो अदर लैंग्वेज आर हैविंग प्रॉब्लम टू एक्सेप्ट अदर एनवायरनमेंट डेवलप्ड प्रोग्राम, बट यहाँ पे पाइथन में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दे कैन बी इंटीग्रेटेड ऑल टुगेदर and they can perform in a unit, whether this module has been developed on Windows environment and this module has been developed on Linux environment। इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम होने के बाद भी डेवलप्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, दे कैन बी कंबाइंड टुगेदर, दे कैन बी इंटीग्रेटेड टुगेदर टू वर्क एज अ यूनिट, ठीक है। बाकी के लैंग्वेजेस में अगर हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मॉड्यूल्स को बनाया है, तो दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स व्हेनेवर वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दोस मॉड्यूल्स। क्लियर? किसी को बच्चा नहीं समझ में आएगा तो बताना। फ्री एंड ओपन सोर्स, दैट इज आल्सो अ बिगर एडवांटेज विद दिस लैंग्वेज, ठीक है। दैट इज आल्सो अ वेरी बिग एडवांटेज विद दिस लैंग्वेज। This language is freeware, freely available and open source. Open source का मतलब होता है source code is also available if you want to do the changes in Python code. Python programming के अंदर में अगर आपको चेंज करना आता है, जिस लैंग्वेज में ये डेवलप हुआ है उस वो लैंग्वेज अगर आपको आती है और आपको प्रोग्रामिंग आती है कंपाइलर की, तो यू कैन update that particular language according to your requirement and you can install in your computer. Open source का मतलब ये होता है। and freeware का मतलब है, free मतलब we are not going to get any license for installing this particular software in our computer, ठीक है। variety of uses and applications, ये मैंने आपको कंप्लीटनेस के टाइम पे बता दिया था, ठीक है। वैरायटी ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशंस का मतलब है वी कैन डेवलप एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन इन पाइथन एनवायरनमेंट, ठीक है। कोई भी टाइप का हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। Some applications are also mentioned over here. Scripting, स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस अगर आपको डेवलप करना है तो वहां पे हम HTML यूज करते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड दैट इज आल्सो नोन एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द वेबसाइट्स, बट बैकग्राउंड में पाइथन यूज होना है। व्हेनेवर वी आर डूइंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, उसमें क्या होता है, दो तरह की स्क्रिप्टिंग होती है, एक क्लाइंट साइड होता है, एक सर्वर साइड होता है। तो whenever we are going for server, it will be Python, Java, C++ or ASP.NET or any language, proper language which is capable to do the server side scripting, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। देन वेब एप्लीकेशंस, फिर गेम डेवलपमेंट, दिस इज टू पॉपुलर फॉर डेवलपिंग द गेम्स। बाकी के सॉफ्टवेयर, बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में ये कैपेबिलिटी थोड़ा सा मिसिंग है। We can develop game in Java also, we can develop game in C++ also, but इनके जो इंटरफेसेस हैं and the predefined codes which are made, packages are made
functions are made that can be ready-made used whenever we are going to develop games. Database applications can also be developed in this one easily. System administration से related अगर कोई software है, security से related कोई software है, that can also be developed in Python very easily. ठीक है? Rapid prototyping का मतलब होता है डिजाइन्स, ठीक है, डिजाइन करना, किसी भी सिस्टम का मॉडल डिजाइन करना. तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स भी हम इजीली डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज ग्राफिक्स के लिए पाइथन के अंदर में एक अलग से ही मॉड्यूल है, पैकेज है, एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स. GUI प्रोग्राम्स, GUI के लिए भी अलग एक पैकेज है. यूजिंग दोस पैकेजेस, this is very easy to develop a window driven programming, window driven software. उसमें बटन्स, जितने भी GUI के आपके कंपोनेंट्स है, बटन्स, इवेंट्स, for them already defined programs are there, already defined functions are there, they can be directly used in our graphics designing programming. अब देखो the demerits or disadvantages of Python. पहला है demerits, जो कि मैंने बताया था, because it is interpreted language, it is little bit slow than other languages. It is little bit slow. ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही slow है. It is little bit slow than other languages because in compilation it takes more time, and the languages which are getting compiled, they takes less time than interpreter. That's why it is little bit slow. Then the next one is it is having lesser number of libraries than C, Java and Perl. Compared to other languages, this is having less number of libraries. But then also it is complete language, and we are capable to do all our operations in this one. Then next one is not strong or type building. सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज यही है कि इसमें कोई डेटा टाइप नहीं होता है. पाइथन इज नॉट हैविंग एनी डेटा टाइप. यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, इन अदर लैंग्वेजेस वी हैव टू डिक्लेयर द डेटा टाइप फॉर द वेरिएबल, बट हियर विद द initialized value only, this language is going to identify the data type of that particular variable. Whenever we are assigning the value to the variable, that is only going to identify the data type of the variable. That is only the third demerit. Not easily convertible. अब देखो, the advantages are only going to become the disadvantages of this language. Not easily convertible का मतलब होता है whenever we are trying to convert a program into another programming language. Say for example, हमने एक प्रोग्राम बनाया है Python के अंदर में for doing something. अब when we are trying to convert that particular program source code into C++ और Java, ठीक है, तो because the source, इसका जो syntax होता है, the syntax is too small and change है इसका syntax. Due to that, the programmers are facing very difficulty to change the source code from Python to another language. That is one disadvantage. ठीक है? These are the advantages and disadvantages of Python language. अब नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी लाइव आपके मंडे को होनी है, तो मंडे की क्लास में मैं
आपको कैरेक्टर सेट्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स ये एक बार फिर से रिवाइज करूंगा एंड ऑल ऑफ यू बी प्रिपेयर फॉर दैट। थोड़ा सा बुक रीड कर लोगे आगे के पेजेस, 4-5 पेजेस, ठीक है, सो दैट you will be having concept of those things in mind and you can ask the questions in between. Okay, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो it will be good for me to answer you people, ठीक है, and the class will also be little bit interacting. Okay, so we will meet on Monday in live class again, क्योंकि वहां पे मंडे को भी 12:40 से आपकी क्लास है, तो उसमें सब लोग I hope all of you will join again also. ठीक है, thank you for joining the class and थोड़ा सा और आगे 4-5 पेजेस पढ़ के रखना नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू बेटा।